Good morning, dear students. Welcome to the home mentoring session of the SD Vidya School Ambalak and myself CSK Khanna. Dear students, in my previous class, I had shared with you to the theory base of accounting, and basically we had understood what we mean by accounting principles, what are their features, what accounting concepts are there, what are accounting assumptions, what is the necessity of these principles and assumptions, and I had shared with you the meaning of three very important accounting concepts or assumptions that relating to the going concern, consistency, and very important other principle that is associated with the accrual or due concept. Once again, briefly understand all these three concepts because these are very important. Going concern assumption states that it is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly. इस assumption के accordingly बिजनेस एक रेगुलर चलने वाली एंटिटी है एंड देयर इज नो लाइफ फिक्स फॉर एनी बिजनेस. लॉन्ग टर्म तक चलने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एंटिटी है, गोइंग कंसर्न लगातार चलने वाला. इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट दैट ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट विल रेंडर बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड and revenue expenditure that is one whose benefit will be exhausted quickly, say within the year. इस important assumption के basis के ऊपर हम बहुत सारी other जो adjustment है वो accountancy और books में करते हैं. So that's understand that going concern assumption is very important assumption. Other important concept relating to the accounting is consistency assumption. According to consistency assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. जो भी rules, regulation, principles और assumptions accounting information को record करने के लिए या financial statements को बनाने के लिए एक year में जो follow हो जाएं, उनको regularly without any change to be followed year after year. और चेंजेस कब करने हैं? दो केसेस में, when the law or the government of the country say, and second, when the highest accounting body of the country, like in case of India, the Institute of Chartered Accountants of India, they say, then you have to make the changes. Otherwise, the same practices should be followed year after year, again and again, without any changes. Then, the other important assumption was there, accrual assumption or due assumption. According to accrual assumption, a transaction is recorded at the time when it takes place and not when the settlement takes place. I also earlier shared with you that we have to record the transactions in the year or in the period when it has taken place. When the payment has been made, received, that is immaterial. जब वो ट्रांजैक्शन हुआ है हमने उसको उस पीरियड में उस ईयर से रिकॉर्ड करना है. ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी पेमेंट, उसकी सेटलमेंट, उसका रिसीप्ट ऑफ अमाउंट कब हुआ है. द कंसेप्ट इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इट आर एंटर्ड इनटू. तो हमने ये सारी चीजें कब रिकॉर्ड करनी है? जब ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में हुआ है, ये नहीं देखना कि उसकी सेटलमेंट कब हुई है. देन लेट्स डिस्कस सम अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. very important and fundamental accounting principle. You may also count it down as accounting concept, accounting assumption, known as accounting entity or business entity principle. According to the business entity principle, business is considered to be separate and distinct from its owners. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझ लें, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. व्हाट इट से दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट थिंग्स. अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट से दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट from business point of view, not from the businessman point of view.
एक ट्रेडर है, उसकी एक शॉप है, मोहन एंड सन्स, और मिस्टर मोहन उसके ऑनर हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन में मिस्टर मोहन और मोहन एंड सन्स एक ही चीज है, बिकॉज मिस्टर मोहन इज द ऑनर ऑफ मैसर्स Ram and Sons or Mohan and Sons. Now there is no practical difference between Mr. Mohan and Mohan and Sons, but according to this important accounting principle or assumption, it states that Mr. Mohan is separate from Messrs. Mohan and Sons. Mr. Mohan अलग हैं और Messrs. Mohan and Sons अलग हैं, और ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है? Transaction should be recorded in the books of account from the business point of view, not from the owner's point of view. दो अलग चीजें हैं, और ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस. हम किसकी बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं? बिजनेस की. सो द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, not from the businessman point of view. So this is very important principal concept, business entity और separate entity concept. Second बड़ा important और fundamental concept है, that is known as the money measurement principle or concept. According to this principle, transactions and events that can be measured in money terms are recorded in the books of accounts of an enterprise. बेसिक और फंडामेंटल जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी तो उसमें कहा था इट रिकॉर्ड्स ओनली द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट which can be measured in terms of money. Non-monetary transactions, non-financial transactions cannot be recorded in the books of account. Now, for example, a business deals in the various items and the measurement units of different items are different. For example, grocery items may be measured in terms of kg, fruits may be calculated in terms of dozens, clothing may be with reference to the meter or number of pieces, oils may be calculated in terms of liter or gallons. Now, could you measure all these different units? क्या आप ये सारी यूनिट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? दैट ए बिजनेस हैज सोल्ड 100 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, 50 kg ऑफ व्हीट, 10 bags ऑफ राइस एंड 50 pieces ऑफ गारमेंट्स. कुड यू ऐड ऑल दीज आइटम्स? नॉट एट ऑल. व्हाट यू हैव टू डू? You have to convert all these units value in terms of money, and then you have to record in books of account. सो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि जितने भी डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको आप एक कॉमन यूनिट दैट इज मनी में मेजर कर लें और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें. और कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. मैंने आपसे कहा कि अकाउंटिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है कि हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझ लें, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. According to accounting period principle, the life of an enterprise is broken into smaller periods so that its performance is measured at regular intervals. हमने अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा, एक प्रिंसिपल समझा, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल और कंसेप्ट, और ये कहता है दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट. एक बिजनेस की लाइफ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, हो सकता है 10 ईयर, 50 ईयर, 100 ईयर, 200 ईयर्स. तो क्या 200 ईयर्स तक हम वेट करेंगे कि अकाउंटिंग का जो हमने बिजनेस किया उसके रिजल्ट को कैलकुलेट करने में, वेदर द बिजनेस हैज प्रॉफिट और लॉस? तो ऐसा नहीं है. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और प्रिंसिपल से दैट द लॉन्गर पीरियड ऑफ बिजनेस व्हिच इज इनफाइनाइट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट वी कैन मेजर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स. किसके लिए? कि हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर लें कि हमें
बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी हमारी एसेट्स हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज हैं, लाइक दैट. सो दिस इज नोन एज द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. और अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के अंदर हम 12 मंथ्स का एक जो स्लॉट है या 1 ईयर का जो स्लॉट है उसको काउंट करते हैं अकाउंटिंग पीरियड 12 months which starts from 1st April of 1 year and ends on the 31st March of the next year. प्लीज अंडरस्टैंड कि जो ईयर्स हैं हम इसको दो फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं. एक कहते हैं हम कैलेंडर ईयर. कैलेंडर ईयर मींस the year which starts on 1st January and ends on the 31st December of the same year. That is calendar year. Business year or accounting period is a business year which starts from 1st April of every year and ends on the 31st March of the next year. So please understand, in accounting we follow the business or the financial year. So we say like that, which financial year is going on? 2021-22, 21-22. Why 21-22? Because it starts on 1st April 2021 and ends on 31st March 2022. So accounting period concept here say that a period of 12 months or a period of 1 year will be recognized as the accounting period, so that the books of account should be closed and the financial results is to be calculated and all the result to be informed or communicated to the all the groups or parties whose interests are associated or who are the users of the accounting information. These are the very important principles, concepts. I would continue in my next video relating to some other principal concepts or the conventions.